वॉइस ऑडिबल हो समझते? ऑडिबल हो पिला माने वॉइस ऑडिबल हो समझते? हमें ऑडिबल क्लियरली? आज्ञा सर। यस सर। Yes, sir. हमें को मेथड पढ़ते लेक्चर पढ़ते आप कौन पढ़ते? लेक्चर, डिस्कशन, स्टोरी टेलिंग। अरे हाँ ना कौन पढ़ते कौन ना? दिमा आज्ञा सर। कौन पढ़ते लेक्चर? देखो हमें मेथड सब पढ़ुचे टैग्स एंड मेथड्स जेम डिस्कशन करे प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड बेसिकली आर आइडिया देछंदी आर आइडिया आछे जॉन डीवे कथारु बट आर फाउंडर पे हमें क्रेडिट दउचे विलियम किलपैट्रिक। विलियम किलपैट्रिक को किलपैट्रिक अनुसार गोटे मिनट अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक अनुसार अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक प्रोजेक्ट इज ए whole hearted purposeful activity proceeding in a social environment. A project is a whole-hearted, purposeful activity proceeding in a social environment. कथा कहते किलपैट्रिक। अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक प्रोजेक्ट मान होची से what are the steps in project method? What are the steps in project method? Project method का step कौन? What are the steps in project method? First कुछ हम पिला को सिचुएशन दबा we should providing a situation then choosing the project
प्रोजेक्ट को चूज करियो। प्लानिंग द प्रोजेक्ट प्लान करियो। एक्सिक्यूटिंग द प्रोजेक्ट प्लान कलो, प्रोजेक्ट को कार्यकारी भी करियो प्रोजेक्ट बनैबो। बनला पर लास्ट को प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करियो, प्रोजेक्ट ठीक हैला कि भूल हैला, आउ कोठी कोन करेक्शन अछि। इवैल्यूएटिंग द प्रोजेक्ट, सो दीज आर द steps in project रे एतको सब स्टेप्स को आजे। प्रिपेयरिंग सिचुएशन, चूजिंग ए प्रोजेक्ट, प्लानिंग ए प्रोजेक्ट, एक्सिक्यूटिंग ए प्रोजेक्ट, इवैल्यूएटिंग ए प्रोजेक्ट। तब हम डिस्कशन करछे व्हाट आर द मेरिट्स प्रोजेक्ट मेथड रे पढाइबार मेरिट्स कोन। इट गिव्स फ्रीडम टू द चिल्ड्रन, इट गिव्स freedom to the children, पिला मानको फ्रीडम दिए। It enables the children to learn from their own experience. It enables the children to learn from their own experience। पिला माने निज एक्सपीरियंस टू निज अभिज्ञता शिखंती। It is free from the textbook method, textbook method ठारू अलग पूरा संपूर्ण। It is free from a natural method of acquiring knowledge। It is a natural method of acquiring knowledge। So it gives training in social adjustment। It gives training in social adjustment। এটা হলো ডেমোক্রেটিক ওয়ে অফ লার্নিং রে, এটা ডেমোক্রেটিক ওয়ে অফ লার্নিং রে হেল্প করে। এটা পিলা মানকু प्रॉब्लम सॉल्वर बनाए। It promotes democratic learning। It makes learner problem solver। It develops scientific attitude। वैज्ञानिक मनोवृत्ति डेवलप करे। এটা ଗୋଟେ সাইকোলজিক্যাল মেথড। সাইকোলজিক্যাল মেথড মানে এটি আমি পিলার নিড, इंटरेस्ट, एबिलिटी को गुरुत्व देई पाठ पढाऊ। এটা ଗୋଟେ इट इज ए साइकोलॉजिकल मेथड। এটা ଗୋଟେ साइकोलॉजिकल मेथड। these are the merits of a project method। project method एतिक मेरिट्स। तापर कहू प्रोजेक्ट मेथड और डिमेरिट कोन। द डिमेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड डिमेरिट्स कोन, टाइम कंज्यूमिंग। जो टाइम कंज्यूमिंग, दैट टाइम कंज्यूमिंग। यदि प्रॉपर्ली गाइडेंस न हुए, इट प्रमोट्स अनसिस्टमेटिक लर्निंग। गाइडेंस न रहले लर्निंग ता पूरा अनसिस्टमेटिक हे जे। टाइम कंज्यूम माने सिलेबस पिला सरीबो नाही। हां, यदि ग्रुप रे प्रोजेक्ट दोछ, किछि छुआ बेले बेले ग्रुप को डोमिनेट कर दियंती। इट मे लीड टू मोनोपोलाइजेशन। मोनोपोली करंती पिला माने।
monopolization by strong students. May lead to monopolization by some students. The expensive method खर्च भी पड़िबो. It is expensive method मध्य. So this is all about the project method. it होला project method. तापरे हम डिस्कशन करछे आउट मेथड brainstorming method. brainstorming माने गोटे ग्रुप एक्टिविटी टेक्निक जो थरे पिला माने गोटे कंक्लूजन बाहर करंती स्पॉन्टेनियसली बहुत सारा आइडिया कलेक्शन करी ग्रुप रे सब पिला समस्त किसी सॉल्यूशन देबे क्वेश्चन दिया हबो तांको हबो मिसी मासी सॉल्यूशन बाहर करो मिसी मासी की सॉल्यूशन बाहर करो collectively find out the solution. ତେଣୁ it is a group activity technique by which efforts are made to find a conclusion for a specific problem by gathering list of ideas spontaneously contributed by its members. Group of member माने spontaneously contribute करंती हो by its members. ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड ର फाउंडर किए Alex F. Osborne. Alex F. Osborne. Alex F. Osborne ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ସେ ବହିରେ ଏଟା ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ସେ ବହିର ନାଁ ହଉଛି ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଇମାଜିନେସନ ବହିରେ ଏଟା ମେନସନ କରିଥିଲେ ବୁକ୍ ର ନାଁ ହଉଛି ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଇମାଜିନେସନ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ପ୍ରମୋଟ ହୁଏ ଏଥିରେ ଇନୋଭେଟିଭ ଆଉ रिवोल्यूशनरी आइडियाज डेवलप हुए नुआ आइडिया इनोवेटिव आइडिया डेवलप हुए तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड तापरे नेक्स्ट टाइम आउट डिस्कशन करबा जोरा टीचिंग मेथड रे आसे गोटे पॉइंट तो कोनदी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एटा निहत दरकार डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन पाठ पढ़ा होच माने पिला तो अलग अलग छुआ आसीबे ना तनु सेमानु को एड्रेस करिया पे यू हैव टू ब्रिंग वैरायटी it is a process
which we apply to meet students' individual need, interest, ability, level, strength, variety तो variety आने आओ तो इठी या अर्थ होची variety teaching method हो variety TLM हो variety learning experience हो variety example हो variety grouping हो ताको हम कहउछे differentiated instruction पाठ पढ़ा रे differentiated instruction आनिबा variety आनिया दरकार कोन पे एटा दरकार जेहेतु क्लासरूम रे इंडिविजुअल डिफरेंस अछि क्लासरूम रे जेहेतु इंडिविजुअल डिफरेंस अछि तेणु पिला मानको एड्रेस करिया पई differentiated instruction ना आवश्यकता निहाती अछि yes तापरे हमें माने आउडे डिस्कशन करू expeditionary learning ये expeditionary learning कोन expeditionary learning माने एटा गोटे प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो थरे हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को गेन करू एटा प्रोजेक्ट हे परिबो केस स्टडी हे परिबो लैब एक्सपेरिमेंट हे परिबो फील्ड ट्रिप हे परिबो सब हे परिबो माने इट इज ए प्रोसेस होई परिबा इट इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू participating in practical experience रे पार्टिसिपेट करी जो लर्निंग गेन हुए ताको एक्सपेडिशनरी लर्निंग बोली कहा जाए हम कहि परिबा दिस कैन बी प्रोजेक्ट दिस कैन बी प्रोजेक्ट्स एटा प्रोजेक्ट्स हे पारे दिस कैन बी केस स्टडी मध्ये हे पारे और दिस कैन बी लैब एक्सपेरिमेंट एरा लैब एक्सपेरिमेंट मध्ये हे पारे फील्ड ट्रिप मध्ये हे पारे एटसेट्रा हमें एक्सपेडिशनरी लर्निंग बोली कहो एक्सपेडिशनरी लर्निंग रे पिला जहाँ पढ़े ताकू अप्लाई करे रियल वर्ल्ड रे दिस अप्रोच एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू अप्लाई क्लासरूम नॉलेज एंड स्किल टू द रियल वर्ल्ड दिस will help to apply knowledge in real world yes then हम आउ कोन पढू आउडा सेतरे inquiry based learning क्वेश्चन आसे पाए कोचे inquiry based learning माने the promote ideas of learning by investigation by inquiry where students can complete project and ask question and find answer by themselves it promotes the idea of learning by investigation
where students can complete project, ask questions, and find answers by themselves. निजे निजे आंसर करें. Well, teacher act as a resource in these times. The goal of students to solve the problem, discover the information by their own. The goal of students. पिला मानकर goal होची. The goal of students to solve problems and discover information on their own. Problem solve करिबा, information discover निजे निजे करिबा. तेणु एटा ये पिला मानकू हायर लेवल रो अचीवमेंट दिए थे. एतरे स्टूडेंट्स माने एक्टिव रोल प्ले करन. निहत भारे एक्टिव रोल प्ले करन. आ गुडा से बेले बेले एथरे गोटे पढ़ती फ्लिप क्लासरूम. फ्लिप माने पिला माने उल्टेबा. कॉइन जेमते में फ्लिप करू, कॉइन को आकाश पकड़े उल्टी जाए ना. फ्लिप क्लासरूम माने इटा जनरल क्लासरूम, ट्रेडिशनल क्लासरूम उल्टा. माने कि थ्योरी पठा हो तुम ऑनलाइन ने घरे बसी थ्योरी पढ़िबो, घरे थ्योरी पढ़ाबो, क्लास रे प्रैक्टिकल हो. एटा गोटे ब्लेंडेड लर्निंग स्ट्रेटजी. ब्लेंडेड लर्निंग माने बोथ. ब्लेंडेड लर्निंग रा माने बुझिबो, इट इज ए ब्लेंडेड लर्निंग स्ट्रेटजी. ब्लेंडेड लर्निंग रा माने होची both online and offline. It is a blended learning strategy that directs the students to be self-dependent learners. That directs the students to be self-dependent learners. Student मानो self-dependent learners करे. At home, घरे से माने निजे पढ़ाती. And test what they have learned. Test what they have learned in the classroom with live problem solving session. माने घरे थ्योरी पढ़िबो, क्लास रे प्रोजेक्ट हो, प्रॉब्लम हो. तब कौन कह जाए फ्लिप क्लासरूम. बुझ पाले कि माना नहीं. तापर आउटे पढ़ती आउटे बेले आसे गोटे वर्ड शुणुव पीबीएल. पीबीएल मान हूँ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग. पीबीएल मान हूँ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग. पीबीएल इज ए मेथड where open-ended problem takes center stage for the students to solve. इठी पिला मानकू ओपन एंडेड प्रॉब्लम दिया जाए. बहुत सारा ओपन एंडेड प्रॉब्लम दिया जाए. एथरे पिला माने कंटीन्यूअसली भाबु था. They think continuously until the problem is solved. They think continuously with motivation and determination. No? They think continuously with motivation and determination until the problem is solved. Think continuously motivation and determination
until the problem is solved. Student journey for solving the problem requires them. पिला माने टी प्रॉब्लम को एग्जामिन करंती तला आ द्वारा क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े, आ द्वारा क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े, हाँ क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुए, डिसीजन मेकिंग स्किल बढ़े, डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप, यस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़े, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बढ़े, निहाती भाबरे बढ़े तापर आउट आसे आउट वर्ड हम सुनो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग माने गोटे मेथड जो पिला निजे प्रोग्रेस को निजे ही जज करे, ये बेसी गुरुत्व दिया जाए लर्नर फ्लेक्सिबिलिटी ऊपर, पर्पस थाए जे मु कहवा शिखी, मु लिखा शिखी, मु पढ़ा शिखी, यहाँ गोटे मेथड, इट इज ए मेथड where students progress through learning objectives at their pace, so निज पेस रे शिखते। आर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होची द स्टूडेंट हैव मास्टर ए टॉपिक, गोटे टॉपिक रे मास्टरी गेन करंती, कॉम्पिटेंसी गेन करंती, तेणु एटा पर्सनलाइज्ड लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एटा गोटे पर्सनलाइज माने पिला मानक अनुसार भ्यारी करे, दैट पर्सनलाइज्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। लर्नर मानक फ्लेक्सिबिलिटी थाए, इट ब्रिंग्स ए ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग, इट ब्रिंग्स greater flexibility in learning, तो competency based learning तक पावर। जंती आउट आमे देखु जंती टीम टीचिंग, टीम टीचिंग माने जितबले ग्रुप और 2 or more teachers teach a class together for a same reason, some reason, group of teachers teaches a common class, गोटे क्लास को मिसी की पढ़ाते, तो टीम टीचिंग को अदरवाइज को टीचिंग भी कहा जाए, परस्पर भीतर कोऑपरेशन रहे ना, ताको को टीचिंग भी कहा जाए। when 2 or more teachers plan to teach a class together, teach a class together, ताको कहा जाए टीम टीचिंग। टीम टीचिंग रे परस्पर भीतर कोलैबोरेशन बढ़े, कोऑपरेशन बढ़े, नुआ नुआ आइडिया, न्यू आइडिया शेयर हुए, ये टीचर तो से गोटे कहले, से टीचर ताको गोटे कहले, परस्पर भीतर कोऑपरेशन बढ़ियो, परस्पर से माने पाठ पढ़ा रे सप्लीमेंट करंती, सप्लीमेंट इच अदर, से किछ कहला ये किछ कहला परस्पर को सप्लीमेंट कले, तको कहले टीम टीचिंग। जा गोटे मेथड लास्ट टाइम देखबा ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड जे कहू छै ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक गोटे वर्ड आछि दैट इज ह्यूरिस्को, ह्यूरिस्को रो अर्थ होछि आई फाउंड आउट, खोजिबा खोजिबा। ह्यूरिस्टिक मेथड रो फाउंडर होछंदी हेनरी आर्मस्ट्रांग, एचई आर्मस्ट्रांग तार फाउंडर, आर्मस्ट्रांग। ह्यूरिस्टिक मेथड रे कोन हुए, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, एटा मध्य प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग गोटे
एटा मध्य डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग गोटे एटा मध्य एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग क्वेश्चन दिया जाए सॉल्यूशन दिया जाए पिलाने सॉल्यूशन निजे निजे बाहर करियो हां ह्यूरिस्टिक डिस्कवरी भीतर फरक कोन डिस्कवरी नुवा आइडिया किछि न बाहरे ह्यूरिस्टिक में सब नुवा आइडिया बाहरे इनोवेटिव आइडिया बाहरे इनोवेटिव आइडिया एथे इनोवेटिव आइडिया डिस्कवरी में गोटे सॉल्यूशन समते जानि छंती तमे सेटा बाहर कलो डिस्कवरी अर्थ कोन जिंस आगुर थाए तमे बाहर कलो ह्यूरिस्टिक किछि नुवा आइडिया बाहरे ह्यूरिस्टिक मेथड बोली कहै जाउछि ठीक अछि ओके एथिबा में डिस्कशन कले मेथड्स तो लर्निंग रो फास्ट बीट सइला हमें काली डिस्कशन करबा ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग माने तमर जो एतरे जो टीचर सेंटर्ड लर्नर सेंटर लर्निंग सेंटर ये तीनटा अछि ये तीनटा जगह डिस्कशन करिया कले तापर आ गोटे बीट रहइबो एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी कोन टीएलएम कोन यूज करबा टीएलएम सहित हमर जो स्मॉल ग्रुप डिस्कशन यूजिंग कंटेक्स्ट ऑफ द लर्नर तापर ग्रुप एक्टिविटीज स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज तापर इंक्लूसिव एजुकेशन काले हम ऑर्गेनाइजिंग देखियो बुझले ती कथा पिला माने माना नहीं को आगे सर हो थैंक यू सो मच